Hello friends, welcome to our channel Math Battlefield by Ajay Yadav. Okay, now let's start the question number 5 of exercise 2.4. We have to factorize this. So in the very starting of the video we have studied to factorize a quadratic polynomial and a cubic polynomial. Quadratic को कैसे करते हैं? By splitting the middle term. और cubic के लिए एक proper method है that we will be following and seeing over in this question, right? So किसी भी क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे? Let px equals to this, right? After this cubic polynomial में क्या करना होता है? आप कांस्टेंट टर्म के क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स, राइट? सो 2 के फैक्टर्स कौन कौन है? दैट मींस 2 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 2 आर. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? राइट? 2 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 and not only plus 1 plus 2, it can also be divided by plus minus 1 and minus also, right? So it can be divided by plus 1 also and minus 1 also, 2 also and minus 2 also. In place of this, if you want to write this together, you can write this as plus minus 1, and if you want to write these two together, you can write plus minus 2, right? Okay, so we have written like this. After this, what you need to do, आपको 1 by 1 चेक करना है कि इस वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो आंसर 0 आता है कि नहीं. द मोमेंट व्हेन यू गेट आंसर 0, you have to stop it there and you need not to check for other factors, right? For example, at x equals to 1, हमने इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? 1, right? So पॉलिनोमियल में at place of x we will write 1, put in RHS also, 1 cube minus 2 into 1 का square minus 1 plus 2. So this shall be 1 का cube will be 1 minus 1 का square 1 and this is 2 minus 1 plus 2, right? This is plus 1 minus 1 minus 2 plus 2 cancel and the answer is 0. You will write since when we had put x equals to 1 in polynomial, the answer is 0, right? अब जैसे ही इसके लिए आंसर 0 आ गया, आपको -1, 2 या -2 पॉलिनोमियल में पुट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो एट दिस मोमेंट व्हाट यू विल सी, यू रिमेंबर द फैक्टर थ्योरम. 2 पार्ट थे फैक्टर थ्योरम की. एक क्या कहता था? इफ पॉलिनोमियल में आपने कोई नंबर डाला a एंड द आंसर इज 0, देन x minus a is factor. x minus a is factor of px, right? Similarly, if we have put x equals to 1, right, in the polynomial, so therefore इस 1 को अगर इधर लेंगे तो it will be x minus 1. So similarly, x minus 1 is, so therefore we will say since this is equals to 0, so x minus a is factor of px, is factor of px. This is said by what? By factor theorem. By factor theorem, right? Now after this what we will do? The very first step is factors. Find the factors of constant. Second, put these values in the polynomial and get 0 and use the factor theorem to find the factor, right? After this what we will do? We will divide this given polynomial by that factor. So on dividing px by x minus 1, on dividing px by x minus 1, what we will get? So divide this. So the polynomial is x cube minus 2x square minus x plus 2 and the factor is x minus 1, right? Now divide it. You know division very well. इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे. when x cube is divided by x, what you will get? x square, और उसको हम यहां लिख देंगे, राइट? अब इस x square को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे, राइट? सो दिस शैल बी x cube and this shall be minus x square. नाउ साइन चेंज, प्लस का
ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस, राइट? नाउ कैंसल इट, दिस इज इन प्लस एंड दिस इज माइनस, कैंसल. नाउ दिस इज माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस x स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 2 में से 1 गया, माइनस x square, right? And the rest will come as it is. This will be minus x plus 2, right? Now divide this its first term by its first term. So minus x square को जब x से divide करेंगे, what will be left? Only minus x. तो हम यहाँ पर minus x लिख देंगे. अब इस minus x को इन पूरे से multiply करेंगे. So when minus x is multiplied by this, it will be minus x square, right? And when we multiply this, minus minus plus, and 1 into x is x, so this is plus x, right? Now change the sign, minus the opposite is plus and plus the reverse is opposite is minus, cancel it, this is minus, this is plus, and this is minus and this is also minus, minus minus plus हो जाते हैं, तो minus 2x plus 2, right? So this will come as it is. Now again divide its first term by its first term, so minus 2x को जब x से divide करेंगे तो what will be the answer? Only minus 2, right? Now divide this minus 2 by this whole term, so it will be first of all minus 2x and then minus minus plus 2, right? Change the sign, plus का opposite is minus का opposite is plus and plus का minus is minus. This is plus, this is minus, cancel, this is plus, this is minus, cancel, remainder is 0, right? Okay. Now after this, okay, you write the reason factor theorem here. Okay, I am rubbing this part. Okay. Now let's see how to proceed further. Now this is question, we are taking this. Now x square minus x minus 2. So this is a quadratic polynomial and we know how to factorize a quadratic polynomial by splitting middle term method. By splitting middle term. By splitting middle term. By splitting middle term method, right? What is splitting middle term method? So now x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1 और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट से, सो दैट शैल गिव अस -2, राइट? सो 1 into -2 will give you -2 and x का कोफिशिएंट क्या है? -1, राइट? नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 है एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या है? -1, राइट? सो द टू नंबर्स आर व्हाट? 2 and 1, राइट? सो 2 minus 1 कितना देगा? 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? -1, राइट? सो 2 minus 1 नहीं होगा, ठीक है, वी विल इंटरचेंज द साइन, -2 and +1, राइट? सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस, -2 into 1 will give us -2 and -2 plus 1 give -1. This is what we want, right? Okay, the factors are -2 and 1, right? So अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे किसमें? -2x and +x. So now this is x square minus this term we will split into -2x plus x minus 2, right? Now this will come as it is. Now we have, what is the next step? We have to take common from this and from this so that the two brackets comes out to be same, right? So take x common from here, so this is x minus 2 and from here nothing is common, just take +1, so this will be again x minus 2. Now this bracket and this bracket should always be equal after taking common. तो ये और ये दोनों common है, take this common. So when you take this common, right, ये यहाँ से remove हो गया, ये भी remove हो गया, बचा क्या? सिर्फ x and +1, right? So these are the two factors of this quadratic polynomial. Now you will write by division algorithm, right? हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था पॉलिनोमियल का, राइट? इसे क्या बोलते थे? डिवाइजर, इसे डिविडेंड, इसे क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर. सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम px किसके इक्वल होता है? gx into qx
प्लस आर एक्स, जहां जी एक्स क्या होता है डिवाइजर, और डिवाइजर क्या था हमारा एक्स माइनस वन, राइट। एंड क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड रिमाइंडर इज जीरो, राइट। नाउ इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू वी कैन राइट व्हाट एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, क्योंकि ठीक है इसी को हमने सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाल लिए, राइट। सो this will be x minus, in place of this what we will write x minus 2 and x plus 1, right. So px is equals to what x minus 1, x minus 2 and x plus 1, right. So these are the remaining two factors, right. So we were supposed to find the factors, एक फैक्टर हमें यहां पता लग गया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, so we will write therefore, right. So at last what we need to write, okay, no need of writing, ठीक है, we can end the question here only, right. We were supposed to factorize this, right. So we have factorized. So this is the long method that we have to do for factorizing a cubic polynomial, right. First step is factors find करने हैं constant के. Second step में you have to put this into the polynomial. The moment it gives answer zero, वो उसका क्या हो जाएगा factor by factor theorem. Then polynomial को उससे divide करेंगे, right. फिर इस क्वेश्चन का हम क्या फाइंड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के हम वो तीनों फैक्टर फाइंड कर देंगे, राइट। द सिमिलर, ठीक है, टाइप ऑफ द सिमिलर वर्क वी हैव टू डू फॉर द रिमेनिंग थ्री क्वेश्चंस, राइट। नाउ वन थिंग इज देयर, कैन यू सी व्हेन द पॉलिनोमियल वाज क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स आए थे, दो, और क्यूबिक के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, तीन। दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर्स आएंगे, राइट। सो वी कैन राइट अ पॉइंट, व्हाट दैट पॉइंट इज the number of factor is equal to the degree of the polynomial. What is the rule? Write it down. Number of factors of a polynomial, right. You can write in a point number of factors of a polynomial is equal to degree of polynomial, is equals to degree of polynomial, right. Note it down, and after this we will do its third part, right. Okay, now come to its third part. Again we will let px equals to, what is the polynomial, x cube plus 13x square, right, plus 32x plus 20, right. Now the very first step we will find the factors of 20. So factors of 20 are, what are the factors of 20? Plus minus 1 plus, I have already explained you about this, plus minus 2 plus minus 4 plus minus 5 plus minus 10, right, and plus minus 20, right. So these are the factors. अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, एंड वी विल सी whether the value of the polynomial is 0 or not, right. So first of all at x equals to 1, right, polynomial पुट करते हैं 1, so what we will get, okay, first of all अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, if you use your own conscience, ये सारी हमें क्या चेक करना है कि आंसर कहां पर 0 आता है, राइट. अब ये सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव. अगर आप कोई पॉजिटिव का नंबर डालें, वैसे तो ठीक है, यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू, बट आपको सोचिए कितना लेंथी हो जाएगा, राइट. सो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन प्लस एंड माइनस वाला आंसर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल गिव 0, राइट. तो हम माइनस वाली टर्म पहले डाल देते हैं, x इक्वल्स टू -1, राइट.
So put here minus 1 in the polynomial. So this will be minus 1 की cube plus 13 minus 1 का square plus 32 into minus 1 plus 20, right? So this shall be minus 1 का cube is minus 1 plus minus 1 का square plus 1 and 13 into 1 is 13 minus 32 and plus 20, right? Now 13 minus 1 will be 12 minus 32 and plus 20, right? Add 20 and 12. This will be 32 and minus 32. So what is the answer? 0, right? और जब आपको एक नंबर मिल जाए जिससे 0 आंसर आ जाए, you need not to check for other factors, right? So what you will say, since when we have put x equals to minus 1 in polynomial, answer is 0, so therefore x यहाँ पर minus 1 नहीं, x plus 1 आएगा, right? जो भी यहाँ साइन होता है उसका रिवर्स कर लेते हैं. So x plus 1 is factor of px, ठीक है? And what is the reason behind this? By factor theorem, right? I am writing this here so that I get a space. Now how this x, ठीक है, x plus 1 came, ठीक है? This is very simple. हाँ, x की वैल्यू क्या थी? आपने x की जगह क्या पुट किया था? -1. इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x plus 1, right? Okay. Now what we will do after this step? We will divide px by x plus 1. So we will write on dividing px by x plus 1, right? So let us divide. So what is our polynomial? X cube plus 13x square plus 32x plus 20, right? And we have to divide it by x plus 1. तो x cube से x को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट है x स्क्वायर, तो we will write x square here. अब इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए. It will be x cube and plus x square, right? x square के नीचे x square वाली टर्म, right? Change the sign. Plus का opposite is minus and minus. Cancel it. Plus minus, right? Now this will be plus 13 and minus 1x square. So this will be 12x square, and this will come as it is, plus 32x and plus 20, right? Now this is 12x square. We will divide by x, so we will get 12x, right? So this will be 12x, right? अब इस 12x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, right? तो पहले 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 12x square. फिर इस 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो plus 12x, right? Now change the sign. This shall be plus का opposite is minus and plus का opposite is minus. Cancel. This is plus and this is minus. Cancel. And this is plus 32 minus 12. This will be 0 and 20x plus 20, right? Now 20, this first term we will divide by x, so 20x divided by x will be 20, so we will write here 20. Now this 20 will be multiplied by first x and then by 1, so this will be 20x plus 20. Now change the sign. Plus the opposite is minus and this is also minus. It is in plus and this is in minus. Cancel. This is plus, this is minus. Cancel. Remainder is 0. Right? Okay. Now what we will do, as we have done in previous question, we will factorize this. Right? We will factorize this. Now this will be x square plus 12x plus 20. Again we will write by splitting middle term, by splitting middle term method, by splitting middle term method, right? So now you need to look for two numbers, right? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट से. कितना आ गया? 20. 1 into 20 is 20 and this is 12. So now think of two numbers which on multiplication gives 20 and on adding or subtracting gives 12. So the number are
10 and 2, right? 10 and 2. Why? 10 plus 2 will give you 12 and 10 into 2 will give you 20, right? So now we will divide, yes, split this middle term into 10 and 12, right? So this shall be x square, and this 12 we will write as 10x plus 2x plus. Now in this, take common from this and take common from this. In this only x is common, so we are left with x plus 10, and from this whole, right, 2 is common. Now when you have taken 2 as common, only x is left, and 20 में से अगर 2 common आ गया तो 10 is left, right? So this bracket and this bracket is same, so we will take this common, right? और जब हमने ये common ले लिया तो ये यहाँ से remove हो गया, यहाँ क्या बच गया सिर्फ x, और ये भी remove हो गया, what is left only plus 2. तो इसके factors निकाल लिए हमने, right? Now again we will write by division algorithm. By division algorithm, px किसके इक्वल होता है? gx इंटू qx प्लस rx, राइट? नाउ gx क्या है? ये ठीक है, px इज दिस डिविडेंड एंड gx इज डिवाइजर. ये रहा क्वोशिएंट और ये रहा रिमाइंडर, राइट? gx इज x प्लस 1 and what is your qx? This is x square plus 12x plus 20. Remainder is 0, right? So x plus 1, और इसको हम क्या कर चुके हैं? फैक्टराइज x plus 10 and x plus 2, right? So here are your factors, right? Polynomial क्या था? Cubic. Degree is 3, तो factors भी कितने बनेंगे? 3, right? So this was your exercise 2.5. With this, your exercise 2.4 gets over. Now we will meet, ठीक है, in the next video with exercise 2.5. Till then, जय हिंद, जय भारत.